Very good afternoon everyone and welcome back to Career Foundation. In this video lecture we are going to talk about JET English 2024. So basically you all have been notified or you have got the notification that this year in our state there is a special examination that is known as JET. First of all, I would like to make you understand what is JET. सबसे पहले हमें यह समझना है कि जेट ये क्या है. एक्चुअली जो जेट एग्जामिनेशन है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इट इज जस्ट लाइक यूजीसी नेट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड जस्ट लाइक यूजीसी नेट. इफ यू हैव डन पीजी then it is great opportunity for you to appear in this examination. Now the question comes that if I qualify this examination, what will we get? You'll get nothing, but simply what happens if you qualify this examination, then you will be just an assistant professor, otherwise you'll get chance to be a PhD holder. So what happens right now, you know, in our state when there were everywhere darkness, at the moment you can appear in this examination and you can learn the things. So today I am talking about the syllabus. तो आज के क्लास में बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपका सिलेबस के विषय में. So let's understand the syllabus. First of all, I would like to request everybody to share this session among your friends, so most of the students will come and they will just mug out the benefit out of this class. Okay. देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आप सभी को कि जेट का जो एग्जामिनेशन है ये आपका यूजीसी के जैसा है. एंड यहां पे अगर बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट दिस देन व्हाट हैपेंस, ध्यान दीजिएगा कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल वाइज यहां पे बात करने वाले सिलेबस को. ठीक है, डिटेल्ड वाइज हम लोग बात करते हैं. देखिए, ये जो आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन है दैट इज जेट, है ना. जेट का आपका फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेट? झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट. ओके, and the conducting body will be JPSC. Okay, the conducting body will be JPSC. Mode of examination will be online computer based, that is CBT mode. यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है that will be in online mode as you all have done PGT examination. All right. Number of papers, if you talk about the number of papers, there will be two papers for your examination. Number one, that is paper 1, and then paper 2. I'll be talking about each paper, so don't worry in detail, and I will be making you understand what you have to study and what you don't. All right, and after that यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टोटल जो मार्क्स होने वाला है that will be just for 300 marks. All right, you will have to appear in the examination for 300 marks, and two papers are there. Paper 1 is just for 100 marks. Here you will get 50 questions. यहाँ पे जो आपको मिलेंगे कितने questions मिलेंगे? You will get here that is 50 questions. And in the second section that is known as paper 2, here you will get 100 question for 200 marks. And like UGC net, you will be there is no any negative marking for any if you make any answer wrong, no mark will be deducted, so don't worry for that. And I would like to tell you everybody that it is great opportunity for you all that you can appear for that JET examination, because there is the only criteria that is you must have the degree of PG only. All right, that I have also mentioned on my thumbnail. All right, if you are a PG holder then you can simply appear, and the syllabus will be very much easy. When I'll discuss about the things, it will seem to you that the things are very easy. Let's understand. आगे क्या हम बात करते हैं डिटेल में. If I'll go to the detail, you will understand. One second. Here I'll be talking about section wise. All right. First of all, I'll be talking about that is paper 1, then paper 2. In paper 1, what you have to study, that is first, that is research aptitude
all right, and second thing, that is reading comprehension. All right, first that you have to study about research aptitude. In topic 2, that is reading comprehension, then after communication, then reasoning. One thing I want to mention here, मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि आपको क्या मेनली जो आपको फोकस करना चाहिए, that is your paper 2. And in paper 2, 10 sections are there. I'll be detailing all the sections, don't worry, later on. But first of all, it's important to understand paper 1. All right. तो चलिए हम बात करते हैं आगे. देखिए ये आपका क्या है, 4 sections यहाँ पे हैं. और पेपर 1 में भी you will get 10 units here. All right, you will get 10 units here. Like this way, you can, after the reasoning, there is logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people and environment, higher education system, where you will study about the governance, polity and administration. In paper 1, basically 50 questions are there, and for the 50 questions 100 marks will be given to you. So in this paper many teachers will be teaching you simultaneously. सभी बहुत सारे शिक्षक लोग अलग अलग पार्ट पढ़ाएंगे. जैसे यहाँ पे क्या अगर हम बात करें आपका अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, that is of course the part of English language. So I'll be taking this class and different sections will be taken by different teachers. So you don't have to worry about this when you will join the class. This is basically a syllabus discussion. So I won't be detailing the things in such a large scale. चीजों को हम लोग क्या यहाँ पे शॉर्ट वे में चलेंगे, बेहतर वे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे. And I would request everybody that if you feel any kind of problem in the class, then you can comment below. All right, चलिए. So now you have seen that what we have to study in paper 1. And later on, now it's time to discuss about paper 2. In paper 2, I have told you that we have 10 sections here. All right, यहाँ पे हमें कितने sections पढ़ने हैं? Basically हमें यहाँ पे 10 sections पढ़ने हैं. All right, you can see. And इस sections I have detailed a bit. मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हर section को क्या किया, बढ़िया तरीके से डिटेल किया है. So let's understand the things. बात करते हैं चीजों को बेहतर रूप में समझते हैं. When you come about first, that is unit 1. Okay, when you talk about unit 1, in unit 1 what do you find? In unit 1 basically we have to talk about, that is drama. पहले अगर हम UGC सिलेबस के नेट में जाएं तो पहले जो हमें पढ़ना होता था वो एज वाइज पढ़ना होता था. ठीक है, अब नेट, इफ यू विल स्टडी द सिलेबस ऑफ नेट, डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, देन डेफिनेटली यू विल बी प्रिपेयरिंग दिस वन. व्हाई? बिकॉज बोथ द सिलेबस आर इक्वल. There is no any changes in that. All right, so if you are just thinking of that I should sit in JET, then automatically you can sit for the UGC net. So it is, what should I say, एक कहावत है ना हिंदी में कि आप क्या एक तीर से दो निशाना कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिट 1, यहाँ पे क्या अभी जो लेटेस्ट सिलेबस यूजीसी नेट की है, जिसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, चीजों को यूनिट वाइज स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर, दैट इज ड्रामा. व्हाट इज ड्रामा? बेसिकली अगर मैं थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग करना चाहूं ड्रामा पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रामा. Drama is basically just, it is nothing but it is a written word that tells a story through action and speech and meant to be acted on the stage. I'll be making you understand in very simple language what is drama. Drama is simply a written thing. In this time what happens, we go to a movie hall, cinema hall, and what do we get there? There is a big screen. We go there and we watch some actors are there, some characters are there, dialogues are there, music is there, and we feel something delighted that what we are watching. In earlier time, right now we have camera, we have the equipments, that's where system has been changed. But in earlier time what used to happen, that there was a live movie going on the stage. पहले जमाने में क्या होते थे, कैरेक्टर, जैसे आप आज भी देखे होंगे, जैसे दुर्गा पूजा आता है तो लोग क्या है, रामलीला करते हैं. कृष्ण जयंती पे लोग क्या करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं. दैट इज द पार्ट ऑफ ड्रामा.
and what we have to study here different types of drama. हमें यहाँ पे क्या करना है, different types of drama को क्या करना है, basically study करना है. और किन किन type पे drama को study करना, I'll be talking about that. Basically if you talk about drama, there are 5 type of classic dramas. All right, there are 5 types of classic dramas. I have also named that. Number 1, that is comedy. All right, number 1, that is what? That is comedy. What is comedy? If you talk about the comedy, what is comedy? Comedy is basically, in Hindi you can say, that is hasya. Whenever you know something odd situation is there, you simply laugh. That is what? That is comedy. In your sense, it can be said that is nothing but that is the comedy. All right, so what happens? Number 2, that is tragedy. Tragedy is what? Let's understand the tragedy. Tragedy is something when you watch a movie and when you come outside of the hall. जब आप एक मूवी देखते हैं और हॉल के जब बाहर आप आते हैं, at the moment what happens there, if there are tears in your eyes, if the tears are rolling by your cheeks, at the moment it can be said that was a tragedy. Tragedy in Hindi it can be said, कोई भी अगर क्या है आपका ड्रामा का जो एंडिंग पार्ट होता है उसमें क्या है कि किसी भी तरह से दुख से एंड हो, यानी कि वो क्या हो, कोई सैडनेस से एंड हो, तो दैट इज नॉन एज ट्रेजेडी. ऑलराइट, गुड आफ्टरनून श्रुति, गुड आफ्टरनून. या, I would like to request everybody, please share this session among your friends. So I want many people or most of the people to come here and to enjoy in the class. So please share the session. चलिए आगे बढ़ते हैं. If you talk about the farce, what is farce? Actually, when comedy is done more than the comedy, it is basically known as farce. Comedy more than the comedy, it is simply known as the farce. I am only highlighting the things right now because we are here for the syllabus discussions, but when this class will come in the form of maybe that in the paid class or maybe in the YouTube, when it will be going on, when we will be basically talking about the topic, at the moment what will be there, we will have all the details, because UGC net, I have told you that the syllabus is parallel to equal to UGC net. Then what we have to do, we have to study like this. हमें थोड़ा सा deep study करना पड़ेगा, इतना easy study करने से काम नहीं चलेगा. But today we are here for the syllabus discussion. That's why I am only highlighting the things. All right, I am only highlighting the things. चलिए, let's talk about that is drama, melodrama. What is the melodrama? And all these sections you have to study in detail. All right, melodrama is simply like drama more than drama. When I can give the example, when one more thing I want to ask everybody who is live right now, are you comfortable in only English or I must be bilingual? मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही ये लेक्चर आप चाहते हो कि आप बाइलिंगुअल चाहते हो? I'm comfortable in both language, so please mention below that you want this class only in English or in both. All right, चलिए आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं. ड्रामा जैसे एग्जांपल के लिए, when you come outside of hospital, you can see a lady there whose husband is dead. At the moment she is just behaving like that. She cannot live without her husband. That is simply melodrama. जब हम ड्रामा ज्यादा करने लगते हैं, ड्रामा मोर देन ड्रामा इज नोन एज मेलोड्रामा. ऑलराइट, नेक्स्ट that is what? That is musical drama. All right, that is what? That is musical drama. And all these 5 classical drama basically, and more drama, simply you have to study here British drama. All right, you have to study here British drama, American drama. All right, Indian drama, non British drama, different kind of drama we will study. But when we will come to the detail, I'll be talking about in the another session in detail. All right, here you can see I have mentioned all dramas like British drama, Elizabethan to Victorian age. You know Elizabethan age, and here the Victorian age is there. Post and modern, modern and postmodern plays, European dramas, American dramas, post-colonial drama, Indian drama. All these dramas are to be studied. We will have the detailed class. Don't worry for these. This is only for syllabus discussion.
And I would like to request everybody that if you want this, there will be a paid course in our app, that is Career Foundation. If you want to join the course, अगर आप चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आप करियर फाउंडेशन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको जेट इंग्लिश की क्लासेस दिखेगी, एंड बेसिकली यू कैन डू द क्लास with a cheap fee, you can say, and extra I think discount will be available there because holy season is going on. इस होली पे क्या है, आप बहुत ही सस्ते फीस में जेट की तैयारी कर सकते हैं. आप यूजीसी नेट की फीस देखेंगे ना 40-50,000 के आसपास यूजीसी नेट की क्लासेस की फीस होती है, बट आप यहाँ पे क्या है, मुझे लगता है अभी 10 या 12,000 के आसपास होगा. आप ऐप डाउनलोड करके जेट इंग्लिश की क्लास वहां पे देख सकते हैं, एंड इफ यू फील लाइक that you are getting something out of me, then you can join the class. I'll see you there with the detailed lessons. चलिए आगे बात करते हैं. Now what I'm talking here, let's see. Now what if you come to the number 2, that is the poetry section. All right, first of all, it's very important to understand what is poetry, because what happens कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जनरली maybe in CBSE board or in JAG board too, we listen poetry. All right, we listen, that is poetry. So first of all, it's very important to understand what is poetry. Poetry is nothing, according to William Wordsworth, it is something like the spontaneous, if you think about this is nothing but the spontaneous overflow of the powerful feelings. Something what happens if you have some kind of feelings, if you want to just note down them. देखिए, कहा जाता है कि पोइट्री लिखने के लिए आपके अंदर फीलिंग्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. You might have heard that many poets are there who are already cheated in their life, and after that they become poets. Many of the singers you can find who are there in love with someone and the heart was broken and they become simply singers. Why this is happening? Because the feelings are there. After that the feelings come, and what happens, it is something like, suppose when I'm just thinking about, देखिए पोइट्री कभी भी ना आप क्या है सोच के नहीं लिख सकते हैं. ये आपके अंदर का क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस, अचानक से एक फीलिंग आती है, एंड यू हैव टू नोट डाउन देम. And Hindi, you know, that is the Hindi poetry. Many poetries are there. You might have studied in the lower classes, so there's no issue. But we will have the study of different kind of poetries here. So, what kind of poetry we shall be studying? I want to, one second. मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि what type of poetries we will be studying. Let's see. We shall be studying about, that is number 1. All right. Number 1, that is narrative poetry. In narrative poetry, it is such kind of poetry जहां पे चीजों को हम क्या करते हैं, narrate करते हैं, चीजों को क्या करते हैं, सुनाते हैं basically, and that is known as narrative poetry. Number 2, that is dramatic poetry. Something in this poetry section. In this poetry section, what happens? We do the things. We write the we get the poem in the dramatic form. जहां पे क्या है, आपको एक्शंस दिखेंगे, आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे. ऑलराइट, गुड आफ्टरनून जोया. यहाँ पे क्या है, आपको डायलॉग्स दिखेंगे. तो डिफरेंट टाइप जो आपके ड्रामा के जो एलिमेंट होते हैं, उस सभी एलिमेंट्स इस टाइप के पोएट्री में दिखते हैं. एंड नंबर 3, दैट इज लिरिकल पोएट्री. लिरिकल पोएट्री सिंपली यू कैन से दैट इज इन हिंदी जो गीत टाइप पे आपका क्या होता है, पोएट्री होता है, दैट इज नोन एज लिरिक पोएट्री, वेयर यू विल गेट द थिंग्स. एंड ये क्या है, आपके डिफरेंट टाइप पे और भी जो होते हैं पोएट्री, जैसे एक क्या है आपका यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री है. देखिए मेटाफिजिकल पोएट्री आपने क्या है, आई थिंक दैट इन पीजी you might have got this one. फॉर्म कब से फिल होगी? Actually, Neha, let me inform you that already we have got the notification and the vacancy is supposed to come very soon. बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी. बट सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस बहुत डीप है, तो आपको अभी से तैयारी करना चाहिए. That's very important. All right. तो आप क्या है, फॉर्म्स का इंतजार ना करें कि फॉर्म कब आएगी, अभी से आप स्टार्ट करें. देखिए सिंपली क्या है, अगर हम बात करें थोड़ा सा मेटाफिजिकल पोएट्री, देखिए मेटाफिजिकल पोएट्री इज व्हाट, लेट्स अंडरस्टैंड. मेटा प्लस फिजिकल. ओके, मेटा plus physical, that means simply what happens, metaphysical means something you can say
spiritual type of poetry, and such kind of poetries were written I think in the 17th century. That's way, and there were different kinds of poets who were just writing such kind of poetry. क्योंकि आप देखेंगे तो poetry के अलग अलग क्या है जैसे रोमांटिक पोइट्री है, नियो क्लासिकल पोइट्री है आपके, जो हम लोग क्या है आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अलग एंग्लो सैक्सन पोइट्री है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरा में अलग अलग पोइट्री का आपका नेम्ड किया गया, अलग अलग हम लोग क्या है डिफरेंट डिफरेंट पोइट्री यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या मेटाफिजिकल पोइट्री की हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द मेटाफिजिकल पोइट्री, जॉन डन इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। All right, John Donne. You can, as you know, that William Shakespeare is the father of English drama, and Christopher Marlowe is the what should I say? The father of tragedy. In the same fashion, you can say that if you talk about the metaphysical poetry, John Donne is the father of this metaphysical poetry. And now it comes that what kind of poetries are there, what that we have to study in JAT. So you can see I have given some collection here. Number 1, that is ode. Number 2, elegy. Number 3, that is sonnet. Okay, these are the different forms of poetry that we have to study in JAT. All right, 1 second. So what happens? Sonnet, you might have heard about the sonnet in graduation. Sonnet used to be 16 lines, but later on what happened, 2 lines were deducted, and finally it came in the form of 14 lines. All right, and free verse, ballet, lyric poetry, blank verse, different kind of poetries we have to study in JET, and we'll come to know about this thing. Now I shall be talking about unit 3. All right, unit 3. In unit 3 what we have to study, let's see. First of all, we have to study simply fiction and short story. Okay, in unit 3 we have to just study that is fiction and short story. What is fiction? Fiction is nothing but this is something, you can say that novel is also like a fiction. Why? Fiction is something like imaginative form. All right, when you imagine something, it is something like when you write a story, and when it is something like that is in imaginative form, you can say that is a fiction. ये क्या होता है कि इमेजिनेटिव क्या होता है आपका आर्ट होता है, और शॉर्ट स्टोरी तो बेसिकली आप लोग जानते ही हैं. आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ सम नॉवेल्स, यू कैन से दैट वी हैव टू स्टडी हियर अलोंग विद द ऑथर. सो लेट्स सी दैट कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी हमने मेंशन किए हैं जो हमें यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है. जैसे अब नॉवेल की बात करें तो आप देख सकते हैं आपका क्या है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. इट वाज रिटन इन 1678 and the name of the writer was John Bunyan. All right, number 2, that is Robinson Crusoe. It was written in 1719 and the writer name is Daniel Defoe. Gulliver's Travel, you might, if you are the student of CBSE board, you might have studied this thing, this particular novel in class 9. I think आपने क्लास 9 में ये पढ़ा होगा. yes or no मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा. और जब हम लोग डिस्कस करेंगे, when we will have the class in detail, we shall be talking about, so don't worry for that. Now that in you can find Clavitia. It was written in 1748 and the writer named Samuel Richardson. He was a very famous writer. Tom Jones, 1749, written by Henry Fielding. I think this was in the graduation. The life and opinions of Tristram Sandy Gentleman. It was written in 1759 and the name of the writer is Lawrence Sterne. Ima you might have studied in, I think, in PGT. Ima आपका क्या था, PGT वाले सेक्शन में था, PGT में था, and इसके राइटर कौन है, Jane Austen. So you can see I have given some of the novels that you have to study. All right, fiction simply you can take like that. Fiction is the synonyms of the novel. Okay, and these kind of novel you have to just study. If you talk about basically short stories what you know, short story is something like a story. नहीं 15-20 मिनट लगे जी. So what happens here, if you talk about the short story, in the short story I have given here some of the collections that you have to study, like Shooting an Elephant, written by George Orwell, A Sound of Thunder, Ray Bradbury, the Nightingale and the Rose, Oscar Wilde,
And here what you do you find the necklace? I think this one you have studied in the graduation. All right, तो आप लोग कमेंट बॉक्स मुझे बताएं क्या ये आपके ग्रेजुएशन में ये वाला जो नेकलेस है ये वाला पार्ट था कि नहीं, और इसके जीडी मोपासा आपने पढ़े होंगे, मोपासा का ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्या आपके शॉर्ट स्टोरी जो आपके आने वाले हैं आपके जेट में, तो वन बाय वन हम लोग क्या इसके विषय में स्टडी करेंगे। इन यूनिट 4 in the earlier at the beginning I have told that we have to just study here 10 sections. We have to just cover 10 sections. All right, हमें क्या करना है यहाँ पे 10 sections को cover करना है। So what happens here, what do you find, that is unit 4. In unit 4 that is non fiction, आपको unit 4 में क्या दिखाई पड़ रहा है, that is non fiction. And what is the non-fiction? Simply you may have a very clear cut definition that the opposite form of fiction is non-fiction, यानी कि नॉवेल जो आप कहते हैं, नॉवेल से जस्ट इसका क्या होता है ऑपोजिट आपका नॉन फिक्शन माना जाता है। So what is that is non-fiction? Let's understand that first of all. Here what happens, any literary work, all right, any literary work that is based mainly on facts even though it may contain fictional element। देखिए जो भी आपकी कहानियां होती हैं जो फैक्ट्स पे होती हैं उतना ज्यादा क्या होता है वो ज्यादा इमेजिनेटिव नहीं माना जाता है, ठीक है, ज्यादा इमेजिनेटिव ना हो कि वो फैक्ट्स पे क्या होती है चीजें बेस्ड होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज नॉन फिक्शन प्रोज। एंड वी हैव टू स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन फिक्शन प्रोज हियर, सो डोंट वरी, वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो चलिए आगे थोड़ा बात करते हैं हम लोग। आई एम सॉरी, इस टाइम फॉर होली है ना, यहाँ पे भी करियर फाउंडेशन में भी बहुत धूमधाम से होली मनाया जा रहा है। ऑलराइट जी, गुड आफ्टरनून राधा कुमारी, गुड आफ्टरनून। देखिए ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है, हमें यूनिट 5 स्टडी करना है, ठीक है। देखिए यूनिट 5 की जब हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, एक बार ना सभी को ना अपने सभी दोस्तों में ना वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्या जेट नाम का एक कॉन्सेप्ट आया है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड द टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय JPSC, यू कैन से। एंड व्हाट हैपेंस सिंपली, इफ यू हैव द डिग्री ऑफ PG देन यू कैन be an assistant professor, it is definite। all right, okay, good afternoon Priyansh, good afternoon। okay, let's see, यहां पे क्या है, let's understand this, that is unit 5 and unit 5 what do you find, language। जब आप आते हैं कहां पे आते हैं, यूनिट 5 में आते हैं, तो यहां पे क्या है, अगर आप यूनिट 1 देखेंगे, इफ यू सी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड 4, all these parts are something different than the part we are talking lower than, you can say after that, that is unit 5। why? because आपने अभी तक देखा, क्या देखा कि हमने डिस्कस किया जितने भी थे, ड्रामा, पोएट्री हमने डिस्कस किया, फिक्शन डिस्कस किया हमने, नॉन फिक्शन डिस्कस किया हमने, बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, now we are going to talk about that is language। all right, we are not talking about the literature is different and the language is different, so I'll be talking in detail and you will understand what is the difference between the language and the literature। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के विषय में जानेंगे, थियरीज एंड पेडागोजी के विषय में। आपने क्या है, पेडागोजी, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी, दैट इज शिक्षण सामग्री। ये बेसिकली आप पे क्या है, एक तरह से कह सकते हैं आपका टीचिंग रिगार्डेड है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट शुड आई से, योर टीचिंग एप्टीट्यूड। बेसिकली यहां पे आपको क्या समझना है, जो लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है। यू नो दैट इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, इंग्लिश इज समथिंग लाइक एडॉप्टेड लैंग्वेज। ये जो भाषा है इसको हमने क्या किया, हमने इसको एडॉप्ट किया है, ठीक है, तो ये एडॉप्टेड लैंग्वेज है, तो वी हैव टू स्टडी दिस वन। इंडिया में इंग्लिश तभी आई, देखिए एक्चुअली क्या है कि आपको पता होगा जियोफरी चौसर इज द
फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री। ऑलराइट, सो इंडिया में बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका जो जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया, आफ्टर दैट वी स्टार्टेड टॉकिंग इंग्लिश and slowly and silently it became the part of our culture. Alright, so what happens simply यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के विषय में जानना है, थियरीज के विषय में जानना है, पेडागोजी जो बोलते हैं, कैसे हाउ यू कैन पेडागोजी सिंपली what is the meaning of this one, let's understand. Suppose you are a teacher and in your class if the students are sitting there, so what you have to keep in your mind while teaching the students, this is simply known as pedagogy. Because simply you have to learn that how you have to convey the student, how you have to convey the things to your student, they should understand. Simply this help us to build a good relationship between the students and the teacher. All right, so we shall be studying about these things. English in use. Next, features of language. What are the features of English language? We would be detailing this thing also. Main components of language, जिसके components हैं आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलेक्ट, डायलेक्ट, लैंग्वेज, तो सभी चीजें ये क्या है हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। आज हम लोग कर रहे हैं सिलेबस के विषय में डिस्कशन। सो हाँ, देन आफ्टर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, हमें क्या है डिफरेंट आप जानते हो डिफरेंट एज से इंग्लिश आपका गुजरा है और उस एज में कैसा कैसा डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश का, इसके विषय में हमें क्या करना है यहाँ पे जानना है। साथ ही साथ क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑलराइट, लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है वो भी हमें यहाँ पे जानना है। ऑलराइट, तो सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा यूनिट 6 में कि इंग्लिश जो आपका है ना, ये क्या है कि एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश अपने आप में इंग्लिश है नहीं, इंग्लिश को बनाने में ना हर लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा सपोर्ट है। सिंपली व्हाट हैपेंस, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। ऑलराइट, इंग्लिश इज द mixture of all kinds of languages. Why did I say कि ये mixture है? आपका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं। You say that मैं बिग बाजार गया था। Maybe that big is an English word, but बाजार is not English word. बाजार is not English. बाजार is simply what? बाजार is a Hindi word. Alright. सिंपली आप क्या बोलते हो, जैसे एग्जांपल के लिए ब्रांदा बोलते हैं, ब्रांदा इज नॉट इंग्लिश वर्ड, इट इज सिंपली हिंदी वर्ड। सो मेनी काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली क्या है आपके डिफरेंट लैंग्वेज से निकल के आए हैं। जैसे आप यूज करते हैं कैपिटल, व्हाट यू यूज दैट इज कैपिटल। कैपिटल आपका जो है दैट इज नॉट इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज सिंपली लैटिन लैंग्वेज। But why do we use in English? English has basically acquiring power. English ने क्या किया, हर लैंग्वेजेस से कुछ वर्ड्स को एक्वायर किया है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो किंडरगार्टन, जो बच्चों का स्कूल होता है, that is not English word. Let me inform you, that is a German word. So what in the unit 6 we will be knowing about the history. All right, because if you want to know about anything, simply you have to go to the history. Later on we will be understanding about that is evolution. Everything has the evolution. What happens when you talk about the evolution? Simply what happens in the past time, the bicycle, अगर पहले की आप जो bicycle को स्टडी करेंगे तो it was different. वो 22-24 इंच की होती थी, and if you talk about the later on there was a great evolution in that, and आज की आप साइकिल देखो, दोनों में बहुत ज्यादा आपको क्या है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसी तरह से क्या है सिंपली जो आपका था इवोल्यूशन बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस में भी आया है। वी हैव टू स्टडी दिस, वी हैव नर्चर्ड दिस लैंग्वेज। सो व्हाट हैपेंस सिंपली इन यूनिट 6 वी हैव टू नो दैट इज हिस्ट्री। आपका क्या है इंग्लिश का जो हिस्ट्री है, कैसे इंडिया में आपका हिस्ट्री मतलब इंडिया में कैसे आपका इंग्लिश आता है, आपका यहाँ पे क्या विद क्या ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन द 17th सेंचुरी। उसके साथ साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बीच में से छूट गया, आप जानते होंगे कि नोवेल जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, नोवेल हाल फिलहाल आया, it has come in the recent years. I think that first novel was written, if I'm not wrong, in the 18th century. Before that it was the era of only the poetry and the drama. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या उसके बाद इवोल्यूशन के विषय हम डिस्कस करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ये डिस्कस करेंगे। अभी देखिए आई थिंक दैट आई एम टेकिंग मोर टाइम ऑफ योर्स। ऑलराइट, सो आई वुड बी डिटेलिंग द थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट,
बहुत छोटा छोटा हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका क्या फ्यूचर है, जैसे मैं थोड़ा सा बात करूं इंग्लिश की फ्यूचर, तो आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश क्या अपने आप में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ऑलराइट, व्हाई इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज? आई वांट टू आस्क यू पीपल, आपना क्या है, चाइना is what should I say, is leaving behind all the countries in the terms of population. They would have said that Chinese language must be the international language. But why English is the international language? Right now I told you people that what happens in English, different kind of languages are involved. यहाँ पे हिंदी के आपको शब्द मिलेंगे, फ्रेंच के वर्ड मिलेंगे, जर्मन के वर्ड मिलेंगे, हर तरह के वर्ड यहाँ पे आपको मिलते हैं। That's way English is nothing but it is just like international language. चलिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्टडी करेंगे, बट जब डिटेल होगी क्लास तो we shall be talking about that. In unit 7, alright, I have told you that 10 units are there. यहाँ पे क्या है, आपके 10 units हैं. And one thing I want to know you from you people, are you getting or not? जो भी लोग अभी लाइव जुड़े हैं, do you understand the things or not? If you have any kind of doubts, then you can comment below. अगर आप लोगों में किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स है चीजों को लेके तो आप डिस्कस करें। ज्यादातर जो टॉपिक हम लोग डिटेलिंग करेंगे वो तब करेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज। राइट नाउ जो जनरली हम लोग कर रहे हैं एक ओवरव्यू है सिलेबस डिस्कशंस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज यूनिट 7। ओके, here what is that? That is unit 7. In unit 7 here we have the cultural studies. You know, here what we have, that is cultural study. You know, India is the land of culture. Different kind of religions are there, different kind of cultures are there, and in our culture there is a great impact of the movies. There is a great impact of, what should I say, people in our culture. What happens, you get many kind of trends. From where do you get the trends? You simply go to watch a movie and you go there. After going there you learn a trends, and simply what happens, you get from there. So what is that? We have to study about the cultural study, and what was the influence of cultural study in the society, in the movies, and what happens in the interactions shaping our identities and क्या है, world view. यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, कल्चरल जो आपका स्टडी है इसका क्या इम्पैक्ट रहा, यानी कि इंग्लिश कल्चर के आने से हमारा, मतलब इंग्लिश के आने से हमारा कल्चर में किस तरह से इम्पैक्ट आया, हमें वो भी क्या करना है, यहाँ पे यूनिट 7 में हम इसका स्टडी करना है। सिलेबस छोटा नहीं, सिलेबस थोड़ा बड़ा है। सभी को गुड आफ्टरनून। सिलेबस बड़ा है लेकिन हम लोग क्या है, एक एक करके अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे, एंड हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा सिलेबस खत्म हो। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि बैच क्या है ऑलरेडी आपका बना दिया गया है। आप यू कैन डाउनलोड द करियर फाउंडेशन ऐप एंड यू कैन गो देयर। आफ्टर गोइंग देयर यू कैन ज्वाइन द क्लास, एंड एब्सोल्युटली राइट नाउ व्हाट हैपेंस, यू विल गेट योर कोर्स ऑन डिस्काउंट रेट। अभी होली का टाइम है तो वहां पे क्या आपको डिस्काउंट रेट में आपकी कोर्सेस मतलब मिल जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज आपका यूनिट 8। आगे क्या है आपका यूनिट 8 है। आते हैं क्लास। यूनिट क्या है, 8। ऑलराइट, इन यूनिट 8 what we have to study? In unit 8 we have to study that is literary criticism. All right, in unit 8 that we have to study is literary criticism. All right, बाहर में थोड़ा सा होली का भी है ना मनाया जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो अभी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, फास्ट में चलते हैं। उसके बाद क्या, जब हम लोग आएंगे डिटेल वे में तो हम लोग जाएंगे, देख सकते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, फॉर्मलिज्म पढ़ना है, न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ना है, आपका पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म पढ़ना है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ऑलराइट, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, ये सभी के सभी हमें यहाँ पे क्या करना, अच्छे तरीके से स्टडी करना है। एंड व्हेन यू कम अबाउट यूनिट 9, ठीक है, यूनिट 9 की हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लिटरेरी थियोरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए आप एक बात याद रखिएगा, जैसे यूजीसी के आप सिलेबस देखेंगे, इफ यू स्टडी द सिलेबस ऑफ यूजीसी और मेनी ऑफ द स्टूडेंट यू माइट हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो व्हाट हैपेंस इफ यू टॉक अबाउट द डिफेंस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 7, 8 एंड 9, ठीक है, 3 सेक्शंस की अगर हम बात करें 7, 8 एंड 9, तो तीनों सेक्शंस में आपको जनरली नेट में आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपको 20 से 22 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
आपको यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो दीज 3 सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये 3 जो सेक्शंस हैं आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, और डेफिनेटली व्हेन विल यू विल जस्ट ज्वाइन द क्लास एंड यू विल गेट द थिंग्स इन डिटेल, वहां पे क्या हम लोग ज्यादा फोकस भी करेंगे। एंड फाइनली क्या है, अगर हम बात करना चाहें, दैट इज यूनिट क्या है आपका, द फाइनल वन, दैट इज यूनिट 10। यहाँ पे क्या रिसर्च मेथड्स है, रिसर्च मटेरियल्स है, जिसके विषय में हम लोग डिफरेंट मतलब डीप में आपको क्लास जब टॉपिक वाइज दिया जाएगा तो इसमें हम लोग डिटेल करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ जी, एक बार सभी को बताएं, किन्हीं को मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। दूसरी बात, कुछ बातें हैं, द इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेक ओनली योर 5 मिनट्स टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो कि आपके यूजीसी नेट इंग्लिश में ये तो 2 साल आपकी एग्जामिनेशन होती है। अब 2 साल जो एग्जामिनेशन होती है, जिसमें क्या होता है आपका, सिंपली ध्यान देंगे, सिंपली आपका क्या होता है, 80,000 स्टूडेंट क्या है अप्लाई करते हैं, और इसका जो रेशियो है आपका क्या है, 100 में 6 स्टूडेंट ही क्या करते हैं, इसको क्वालिफाई एग्जाम करते हैं। और दिस इज नथिंग बट यूजीसी नेट जो होता है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन माना जाता है। एंड उसी संदर्भ में क्या है, आपके जेट की भी एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, जेट के एग्जामिनेशन में उसी संदर्भ में होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको उसी लेवल पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। एंड देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्क, यहाँ पे क्या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। ऑलराइट, सो दिस वाज द सिलेबस, वी डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस ब्यूटीफुली। एंड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा लगा आपको सिलेबस। यहाँ पे देख सकते हैं, वंस अगेन आपके पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 की बात करें, 100 क्वेश्चंस 200 ये होंगे। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 200 मार्क्स, टोटल जो आपका है 150 क्वेश्चंस होंगे, जिनके आपके मार्क 300 होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, जिस तरह से आपकी यूजीसी नेट में होती है, सेम पैटर्न है। Once again, I would like to say to you all that this is the great opportunity that is provided by the Jharkhand government. So, अगर आप चाहते हैं assistant professor बनना, if you have a dream that I want to be a PhD holder, then definitely you should appear in this examination. आपको यहाँ पे appear करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना, तो आप क्या है, करियर फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके नहीं तो आप क्या है, सिंपली आपके पास एक नंबर दिखाई पड़ा होगा, वहां पे कॉल कर सकते हैं। कुछ डेमो क्लासेस भी यहाँ पे अपलोड की जाएगी, उसके बाद आपकी क्लासेस शिफ्ट कर दी जाएगी ऐप में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश यू ऑल अ हैप्पी एंड सेफ होली। थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।